How students, in the polynomial chapters, already we have discussed solve the various sums. We take with the more number of sums, quite interesting and knowledgeable to us also. So quadratic polynomial का हमें पता ही है. So I take with the one or more graphical view. यानी first case, I'm taking the polynomial sums, Cartesian plane, x dash, y dash, origin O. Now I have the parabola. This is the vertex of the parabola. पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए डैश पे. ठीक है. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन में 2a एंड माइनस डी अपॉन में 4a. दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन में 2a एंड माइनस डी अपॉन में 4a, वेयर डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये ग्राफ है पोलिनोमियल का. दिस इज ग्राफ है पोलिनोमियल y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स. सेकंड, इसी का दूसरा पार्ट x dash, y dash. Parabola, vertex of the parabola, coordinate minus b upon में 2a minus d upon में 4a, intersecting a and a dash. ठीक है. This is also a graph of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is less than 0. अब ये दोनों के दोनों जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज द पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इज लेस देन 0 बिकॉज द पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स. और ये दोनों के दोनों वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन में 2a कॉमा माइनस डी अपॉन में 4a. अब ये जो पोलिनोमियल्स है एक्स एक्सिस को दे आर इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स a एंड a डैश. सो दस वी कैन से दैट द पोलिनोमियल, तो इन दोनों के लिए वी कैन से दैट दे आर exactly intersecting the x-axis at the two coordinates, 2 points. So we can conclude that polynomial ax square plus bx plus c graphically is factorizable into two distinct factors. तो ग्राफ से कल मेरे पास में ग्राफ आता है, सो मेरे को इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो दिस पोलिनोमियल फॉर विच a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0 हैविंग द टू वर्टेक्स इज गिवन इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स. सो दिस पोलिनोमियल ax square plus bx plus factorizable into two distinct factors. Now take another example. Again, I draw the Cartesian plane y dash, x dash, x. Now this is the polynomial
y is equal to ax square plus bx plus c, where a is greater than 0. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन में 2a एंड y कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस. क्लियर है? एंड सिमिलरली we have one more x y dash. So this polynomial coordinate minus b upon में 2a comma 0, y is equal to ax square plus bx plus c, a is less than 0. अब ये दो पोलिनोमियल्स के ग्राफ मेरे पास में गिवन है. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, a is greater than 0 opening upwards, parabola opening downwards, a less than 0, and the coordinates of the vertex is given to you, y coordinate 0 at on x axis. Now this polynomial conclusion, अभी ग्राफ से क्या निकलता है कि पोलिनोमियल ax square plus bx plus c is factorizable into two equal factors. अब इस केस में हमने देखा था कि जो पैराबोला है ये x एक्सिस को दे आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो दे हैव द टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. हियर द पोलिनोमियल इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सो दे हैव द टू इक्वल फैक्टर्स x एक्सिस एट. तो ये पैराबोला किसके सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस हैं एंड दे आर इक्वल. सो टू इक्वल सॉल्यूशंस, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. नाउ let's take with the more of the sums again. I draw the polynomial y is equal to ax square plus bx plus c, where a is greater than 0, and coordinates of the vertex minus b upon में 2a minus d upon में 4a, and we draw the graph. Coordinate of the vertex minus b upon में 2a minus d upon में 4a, y is equal to ax square plus bx plus c, where a is less than 0. अब again we have the two parabola opening upwards, opening downwards. अब this polynomial does not intersect x axis at any points. ये दोनों के दोनों जो पैराबोला के ग्राफ है ओपनिंग अपवर्ड्स एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ है, they are no anywhere intersect the x axis at any points. So the polynomial is, so conclusion, the polynomial यहाँ पे the polynomial ax square plus bx plus c is not factorizable. This polynomial जो x axis को intersect नहीं करते, they cannot be factorized. Clear है? So with the graph we can able to say whether they have the exactly, क्योंकि quadratic polynomial के at most two roots होते हैं, 2 या 2 से कम, whether they are the two distinct roots, two equal roots and no roots. तो ये जो ग्राफ है इनके कोई रूट्स नहीं है, they cannot be factorized, जो फैक्टराइज नहीं कर पाते.
so they do not have the roots. Clear? Now let's take with the more of the sums. The graph of, I have given the more sums. The graphs of y is equal to ax square plus bx plus c are given. मेरे पास में y is equal to ax square plus bx plus c given. Identify the signs of a b and c. मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इज गिवन है. I have the graph y dash vertex a जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन में 2a माइनस डी अपॉन में 4a. ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करा ग्राफ एट पॉइंट P. ठीक है. So it is a graph of y is equal to ax square plus bx plus c, where a is less than 0. A is less than 0 because graph is opening downwards. Now clear है? We need to find out sign of a, b and c. तो मेरे पास में a का साइन a is less than 0 because the graph is opening downwards. A is less than 0. Now vertex in the first quadrant. अब ये जो vertex है a फर्स्ट क्वाड्रेंट में, vertex a in the फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ में नजर आ रहा है. मेरा पॉलिनोमियल का जो वर्टेक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो देयरफॉर इसका जो x कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन में 2a ग्रेटर देन 0. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट. सो दिस इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर इज बट a इज लेस देन 0 ऑलरेडी गिवन ग्राफ में. अब यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, माइनस बी अपॉन में 2a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है. तो ये वैल्यू तभी ग्रेटर देन 0 होगी इफ एंड ओनली इफ दिस इज नेगेटिव. देन दिस माइनस बी शुड ऑलवेज बी, माइनस बी भी अगर नेगेटिव होगा तो देन नेगेटिव नेगेटिव कैंसल एंड दिस होल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. अब ये गिवन है minus b by 2a, that is the coordinate of the vertex lying on the first quadrant, always greater than 0. a की वैल्यू लेस देन 0 है. पॉइंट समझने की कोशिश करना. a लेस देन 0 है तो ये लेस देन 0 है तो देयरफॉर क्या निकलेगा, माइनस बी इज ऑल्सो लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, होल पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0. माइनस बी लेस देन 0 है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इम्प्लाइज दैट b इज ग्रेटर देन 0. सो a लेस देन 0 गिवन था, वी हैव फाउंड b इज ग्रेटर देन 0. नाउ ax स्क्वायर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ग्राफ कट्स y एक्सिस एट पॉइंट P. तो y इज इक्वल टू y एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट P. ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 पुट अप करता हूं तो y इज इक्वल टू c. ठीक है. एंड y इज एन पॉइंट, देयरफॉर p का जो कोऑर्डिनेट निकला, p का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा 0c एंड p लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है. तो मैंने a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट P. पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट 0 है, मैंने x की वैल्यू 0 पुट अप की, y इज इक्वल टू c. सो p का कोऑर्डिनेट नाउ p लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन of y axis. So thus c is greater than 0. तो thus कंक्लूजन निकला, thus फ्रॉम द अबव क्या निकला, साइन a is less than 0,
b is greater than 0 and c is also greater than 0. We can many times comes with the we should know how to find the sign of the ABC, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term. So using the graph, how to find the sign of the ABC. Clear students? Let's take with the more of examples. ठीक, so it's clear. ये कुछ सम्स लेते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर में. We take with the find a and b, find ab so that x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b is divisible by x square plus 1. ठीक है. One polynomial is given degree 4, another polynomial x square plus 1 degree 2. This polynomial divisible x plus 1, so that find the a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यूज द डिवीजन मेथड. नाउ x square plus 1 we have x to the power 4 x cube plus 8x square plus ax plus b. x square already x4 है, x square से x square into 1 x square. Now x we can x cube plus 7x square plus ax plus b. अब x cube x square है, x cube plus x 7x square ax minus x कॉमन आ जाएगा, a minus 1x plus b 7x square है, so we take the term 7x square 7 a minus 1x plus b minus 7. अब डिग्री 1 x degree 2, no further division, and given x square plus 1 is a factor. Since x square plus 1 is the factor, therefore remainder a minus 1x plus b minus 7 is equal to 0. So a minus 1 is equal to 0, a is equal to 1, and b minus 7 is equal to 0, b is equal to 7. Hence a is equal to 1 and b is equal to 7. Clear है? So x square plus 1 फैक्टर दे रखा था, तो a और b की वैल्यू निकालनी थी. Now what must be added to? Next question. What must be added to fx 4x to the power 4 2x cube 2x square plus x minus 1, so that the resulting polynomial is divisible by gx x square plus 2x minus 3. कैसे प्रोसीड करेंगे? अब ये कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करते हैं पॉलिनोमियल्स में डिग्री 4, सो दैट द पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय gx. ठीक है, लेट्स सो डिविजन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. प्रूफ fx is equal to gx into qx plus rx. So
fx minus rx gx into qx. नाउ अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको वी कैन टेक इन द ब्रैकेट n माइनस rx। ठीक है, ये पॉइंट्स थोड़ा सा आगे हम देखेंगे इसको। सो ये यूक्लिड डिवीजन में लगभग क्या कहता है, डिविडेंड इज डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर fx माइनस rx। सो fx इसको हमने नाउ अब फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं सेकंड पॉलिनोमियल से। लेट वी डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्वाइट इजी, 4x4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1. I will x square plus 2x minus 3 से I will divide it. So यहाँ पे 4x square 4x4 8x cube minus 12x square minus minus plus cancel minus 6x cube plus 10x square plus x minus 1 minus 6x cube माइनस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 18x प्लस प्लस माइनस 22x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 1 22 प्लस 22 से वी मल्टीप्लाई विद द 22x स्क्वायर प्लस 44x minus 66 minus minus plus, so it will be minus 61x plus 65. No more division, degree 1, no more division. So therefore मेरे पास में therefore remainder minus 61x plus 65. Now answer is, क्वेश्चन क्या था, what must be add, क्या ऐड करना है, so I need to add minus rx। ये ध्यान रखना, we should not write the remainder, तो ऐड करना है, multiply with the minus sign, so it will be 61x minus 65, so this is the my answer। ठीक है स्टूडेंट्स, so what must be added so that the resulting polynomial is divisible by the another polynomial given है। ठीक है, now I have given the one more ग्राफ मेरे पास में given है, जिससे मेरे को I have the given, I am taking the one, two, four, minus one, minus two, minus four। ठीक है, so I have given with the graph of the polynomial, it is like this, y is equal to fx। ये ग्राफ गिवन है जो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px इज गिवन, फाइंड द पोलिनोमियल। द क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ the graph of polynomial px is given। we should aware with the different pattern, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे फाइंड द पोलिनोमियल, चाहे वो ग्राफ फाइंड द पोलिनोमियल। यहाँ पे ग्राफ गिवन है, पैराबोला शेप ग्राफ है, ओपनिंग अपवर्ड्स, वी नीड टू फाइंड द पोलिनोमियल। सो ग्राफ प्रूफ, ग्राफ इसके दो सॉल्यूशन, ग्राफ एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करता है, टू रूट्स है -1 एंड -3, इट हैज द टू रूट्स -1 और -3। सो टू रूट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, अभी हमने देखा था ग्राफ, तो सम ऑफ द रूट्स that is -1 plus -3 -4, product of the
roots minus 3 minus 1 3. So therefore my polynomial is, find a polynomial, therefore the quadratic polynomial is x square minus sx plus p. Already है, so x square plus 4x plus 3. So this is my required polynomial, x square plus 4x plus 3. Clear, students? So in next class we take up the more sums and more chapters. We move to the next chapter also. Keep solving the sums, put the doubts, raise your doubts, and keep watching my video. Thank you very much. Have a good day.